Hi guys, welcome back to my channel, The Psychbot. So today we are going to start with a new topic and a new chapter of class 12, that is self and personality. So let us first talk about what is self and personality individually. So self refers to the totality of an individual's conscious experience, ideas and thoughts about himself or herself. Which basically means कि एक इंडिविजुअल अपने बारे में क्या सोचता है एंड कैसे सोचता है. Whereas personality refers to an individual's differences in characteristic patterns of thinking, feeling and behaving. So these are the characteristics जो एक individual को दूसरों से अलग बनाता है. That is उनके अपने traits, उनकी अपनी characteristic जो उनको society में एक अलग identity देता है. So now let us come to the concept of self. Now concept of self में जो है there are two types of identity, that is personal identity and social identity. So personal identity mainly refers to those attributes of a person that makes himself or herself different from others. For example, if there is an individual and he says, "Hi, my name is Kabir and I'm a very hardworking and honest person, and I like to dance, I like to sing and I believe in God." So अब ये जो इंडिविजुअल है कबीर, ये अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बता रहा है कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है, वो बहुत ऑनेस्ट है एंड वो गॉड में बिलीव करता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी अपनी पर्सनल है, वो किसी से शेयर नहीं करता है या ये चीज़ें उन्हें और से अलग बनाती हैं. So this is personal identity. Then comes social identity, which refers to those aspects of a person that link him or her to a social or cultural group or are derived from it. For example, every individual belongs to some or other religion. So बहुत कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं. So हिंदूज के अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग कल्चर्स होते हैं, मुस्लिम्स के, ब्राह्मण्स के, क्रिश्चियंस के अलग रिचुअल्स होते हैं. तो जब एक इंडिविजुअल कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं उसकी आइडेंटिटी के साथ, जो उससे एक ग्रुप से मिलते हैं. तो दैट इज व्हाट इज सोशल आइडेंटिटी. नाउ कमिंग बैक टू द काइंड ऑफ सेल्फ. नाउ देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ सेल्फ. एग्जैक्टली जैसे हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़े वैसे ही दो सेल्फ होते हैं, दैट इज पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. Now, the personal self leads to the orientation in which one primarily feels concerned with oneself. अब पर्सनल सेल्फ में जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने आप से ही कंसर्न रहता है, उसे बाकियों की फिक्र नहीं है, वो उससे अपने आप की पहले वो अपने आप को प्राइमरी जगह देता है अपनी लाइफ में. लाइक he focuses on his success, on his job, or his own success, his happiness is the first priority for him. Whereas social self emerges in the relation with others and emphasizes such aspects of life such as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, or sharing. So this self values family and other social relationship. Hence, it is also referred as familial or relational self. अब social self जो होता है वो सिर्फ अपने आप से कंसर्न नहीं होता है, बट इट इन्वॉल्व्स अ होल ग्रुप, अ होल टीम, अ होल फैमिली. उसमें जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है, बल्कि वो अपनी पूरी फैमिली के लिए काम करता है, अपने पूरे ग्रुप के लिए काम करता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो कंसर्न फॉर देम. सो दिस इज व्हाट इज सोशल सेल्फ. So, now we'll come to the cognitive and behavioral aspects of self, which includes four parts, that is self-concept, self-esteem, self-efficacy and self-regulation. So let us discuss the first topic, that is self-concept. So the term self-concept, it is the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. So हर एक इंडिविजुअल का एक अपने आप को देखने का एक
जनरल नजरिया होता है, एक नॉर्मल सा नजरिया होता है कि या आई फील आई एम लाइक दिस, आई एम गुड एट दिस एंड आई एम बैड एट दिस। तो जब वो एक इंडिविजुअल और ज़्यादा मोर स्पेसिफिक वे में अपने आप को नोटिस करता है, तब वो नोटिस करता है कि हाँ, मैं रीडिंग स्किल्स में अच्छा हूँ बट मेरी मैथमेटिक्स वीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो कैसा है एज अ होल इंडिविजुअल, वो उसकी अपनी खूबियाँ क्या हैं, उसके अपने नेगेटिव फ्लॉज क्या हैं। सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर सेल्फ कॉन्सेप्ट regarding their social life or their values, their goals, their abilities and beliefs. So इन सबको मिला के वो अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है. So this is what is self concept. Now comes self esteem. So self esteem जो है वो हर एक इंडिविजुअल में होता है and it is very important for the individual. So as person we always make some judgment about our own values and or worth. This value judgment of a person is called self esteem. सो अब जो अगर हम एक स्कूल में देखें तो children having high self-esteem will always perform good in their school academic and they'll always have a huge social interaction with social groups. उनके हमेशा ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे. Whereas children having low self-esteem in school academics will always they will always be aloof. वो कभी किसी के साथ engage नहीं होंगे, mingle up नहीं करेंगे, दोस्त नहीं बनाएंगे, and then they will always display anxiety, depression and increasing antisocial behavior. तो वो हमेशा ही एक डिफरेंट मोड में रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे. सो सेल्फ एस्टीम में पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. लाइक वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग high self-esteem among the children, whereas whose parents help or make decision for them means जो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ, उनके सारे डिसीजंस खुद लेते हैं. सो दोज चिल्ड्रन ऑलवेज सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज उन्हें आदत ही नहीं होती अपने खुद के डिसीजंस बनाने की, वो हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं. सो दैट्स वाई दे ऑलवेज फेस लो सेल्फ एस्टीम. Now comes self-efficacy. Now, what is self-efficacy? It is a person's belief that she has the ability or behavior required by a particular situation demonstrates high self-efficacy. So, अब self-efficacy में क्या होगा? That people differ in the extent to which they believe they themselves control their life outcomes or the outcomes are controlled by luck or fate or the अदर सिचुएशनल फैक्टर्स. अब क्या होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, हमने अपनी मेहनत से चीज़ें चेंज की हैं, बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब तो लक ने किया या फेट ने किया. फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम्स होते हैं तो कुछ बच्चों को आदत होती है, अगर किसी के कम मार्क्स आए तो उनकी आदत होती है कि वो हमेशा सिचुएशनल फैक्टर्स पे ब्लेम करते हैं कि अरे ये तो पेपर ही टफ बनाया था मैम ने, या मैम ने तो चेकिंग ही बहुत टफ की है इसलिए मेरे कम मार्क्स आए, मैंने अच्छे से पढ़ा था. Whereas अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं then they will say that मैंने तो इतनी मेहनत की थी इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए. They will not appreciate the others. But so ऐसे जो बच्चे होते हैं they will always have low self efficacy. Whereas जो बच्चे बोलेंगे कि अगर उनके कम मार्क्स आए तो दे विल एक्सेप्ट देयर मिस्टेक कि हाँ, हमने इस बार कम पढ़ाई की थी, हमने मेहनत नहीं की थी, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आए. सो दे आर एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट, दे आर एक्सेप्टिंग वेयर दे वर रॉन्ग. सो दे आर हाई एट सेल्फ एफिकेसी. वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे या लक पे या फेट पे अपने परफॉर्मेंस को नहीं जाने दे रहे. Next comes self-regulation. Now it is our ability to organize and monitor our own behavior. So people who are able to change their behavior according to the demands of external environment are always high on self-monitoring. Now self-regulation जो है वो कहता है कि जो लोग अपने आप को, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, उसे देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि हाँ वेयर दे आर रॉन्ग एंड
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बिहेवियर को एडजस्ट कर लेते हैं. दैट इज व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन. फॉर एग्जाम्पल कि जब हम अपने घर में खाते हैं सबके अलग अलग तरीके होते हैं. सम पीपल ईट फ्रॉम स्पून, सम पीपल प्रेफर ईटिंग फ्रॉम हैंड. बट व्हेन वी गो इन बिग होटल्स तो हम हमेशा एक टेबल मैनर फॉलो करते हैं. वी टेंड टू eat properly, sit properly, because हमें लगता है that we need to present ourselves in a decent way. So this is what is self regulation, कि हम अपने आप को external environment के according monitor करके अपना behavior संभाल लेते हैं, उसे change कर लेते हैं. Now self regulation also includes self control. Now self control is a very important term. It means that learning to delay or defer ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स. अब हर इंडिविजुअल की एक ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड होती है कि हमें ये तो चाहिए या हमें ये करना ही करना है. अब इन एवरी सिचुएशन अ पर्सन कांट जिद नहीं कर सकता कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए दे नीड प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल. So now there are 3 techniques of self-control that are observation of own behavior, which says that this provide us with necessary information that may be used to change or modify or strengthen certain aspects of self. Second is self-instruction, which says that people all very often instruct their self कि हाँ हमें ये नहीं करना है means नहीं करना है. They try to control their self by instructing themselves. The third is self reinforcement. In this an individual gives reward to himself कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी. They give pleasant reward ताकि वो अपना काम कंट्रोल कर सके, जल्दी कर सके. Now let us have a summary of what all we learned in this. So first we came across what is self and personality. Then we came across the concept of self, which included personal and social identity. Then we came across types of self, which includes personal self and social self. And the cognitive and behavioral aspects of self, which includes 4 parts, that is self-esteem, self-efficacy, self-regulation and self-concept. And the last topic for the day was techniques of self-control, which is very useful for us in our day-to-day life also. That is observation of their own behavior, self-instruction and self-reinforcement. So I hope these topics would be clear to you by this video. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.